Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. नाजरीन, आज की इस एपिसोड में हम बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में जो स्कूल वैन पे एक सुसाइड अटैक हुआ और उसके नतीजे में अभी तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 8 के करीब बच्चों समेत लोगों की जो है वो शहादत हो चुकी है। उस एपिसोड के ऊपर बात करेंगे और हम आज की इस एपिसोड में थोड़ा सा देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या है। ये जो हमला है इसको हम जो सर्कमस्टांसेस हैं करंटली पाकिस्तान के इंटरनल और एक्सटर्नल उसके हवाले से उसको कंटेक्चुअलाइज करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इस अटैक पे पाकिस्तानी स्टेट का रिस्पांस क्या है, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और लास्टली नाजरीन, हम इस ब्रॉडर सिचुएशन को एनालाइज करेंगे दैट ये जो अटैक है इसके मुहर्रिकात को हम किस तरीके से तशरीह कर सकते हैं और पाकिस्तानी स्टेट का जो रिस्पांस है उसको हम किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं टू एक्सप्लेन द ब्रॉडर प्रॉब्लम ऑफ बलूचिस्तान। और ख़ासकर ये जो वाक़या है या जो पिछले 1-2 सालों में बलूचिस्तान के अंदर ग्रोइंग इंसर्जेंसी है, इसके ऊपर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो है वो बिल्ड करेंगे। इस इशू को एक्सप्लेन करने से पहले आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा जो करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस के जो CSS और PMS के हवाले से जो कोर्सेज हैं दे आर बीइंग ऑफर्ड ऑनलाइन। और उस हवाले से जो क्लासेस हैं दे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे 26th of May। सो गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर दीज कोर्सेज और इनके हवाले से जो मज़ीद तफसीलात हैं वो आप गिवन नंबर पे व्हाट्सएप के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। This is a program that will not just offer lectures but also relevant readings as well as free mocks throughout the journey of these courses, and therefore they will be extremely beneficial to those who do not have access to the quality lectures or do not have access to the quality literature, so they can get that online through these lectures. For more details contact on the given numbers. अब आते हैं नाज़रीन इस इशू के ऊपर जो बलूचिस्तान के अंदर वाक़या हुआ आज से तकरीबन 3 दिन पहले। खुजदार के इलाके में जो एक स्कूल वैन थी, स्कूल बस थी दैट वाज ट्रांसपोर्टिंग यंग किड्स टू स्कूल, आर्मी वालों स्कूल, और उन बच्चों के ऊपर जो है वो एक खुदकश हमला हुआ और उस हमले के नतीजे में एक जो ड्राइवर हैं और एक जो बस के अंदर सिक्योरिटी गार्ड थे और साथ में बच्चे जो हैं वो शहीद हुए। उनमें बच्चियाँ भी थीं, उनमें फीमेल्स बच्चियाँ भी थीं और उसमें मेल भी थे। और टोटल जो कैजुअलिटीज़ हैं जो मैं अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस वक्त तक 8 के करीब हो चुकी हैं और 40 के करीब जो बच्चे हैं वो ज़ख्मी हैं। दिस इज़ अ वेरी रेयर एंड अनप्रेसिडेंटेड अटैक ऑन दी स्कूल चिल्ड्रन। उससे पहले हमने ऐसी जो मिसाल देखी थी दैट वाज APS आर्मी पब्लिक स्कूल। वो ऑब्वियसली बहुत सिग्निफिकेंट वाक़या था बिकॉज दैट हैपन इन पेशावर द मेन सिटी, और बिसाइड्स दैट इट लेड टू द किलिंग ऑफ the martyrdom of around 140 children and teachers as well as some of the staff. बट ये जो क्राइम है नाजरीन, ये इंटेंसिटी में, इनफैक्ट कैजुअलिटीज़ के नंबर में तो शायद कम हो बट इंटेंसिटी, क्रूएलिटी उस सेंस में शायद ये उतना कम नहीं होगा। बिकॉज इसमें मैंने कहा कि बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई, बहुत से बच्चे परमानेंटली डिसेबल हुए, आई साइट लॉस्ट हुई। इसके साथ बहुत सारे जो स्टोरीज़ हैं वो मौजूद हैं जो कि एक हाईली अनप्रेसिडेंटेड एंड कंडेमनेबल अटैक है। और ये अटैक इतना सीरियस था, ऑब्वियसली बात है, इतना कंडेमेबल था दैट इवन UN सिक्योरिटी काउंसिल कंडेम्ड दिस अटैक ऑन सिविलियंस एंड पर्टिकुलरली द चिल्ड्रन। नाज़रीन, ये अटैक ऑब्वियसली बात है, इसके अगर मुहर्रिकात को देखा जाए तो इसके जो मुहर्रिकात हैं वो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के साथ भी लिंक कर सकते हैं और जो ग्रोइंग इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान के अंदर, इंक्रीज राइज ऑफ द तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तानी स्टेट ऑफिशियली फितनतुल खवारिज कहती है, उसके साथ अटैच होते हैं। जो बलूचिस्तान के इंसर्जेंट्स हैं जैसे BLA वगैरह हैं वो भी अपने अटैक स्टेप अप कर चुके हैं। इस पर हम बहुत से प्रोग्राम्स कर चुके हैं पिछले 1-1.5 साल में कि ऐसा क्यों हो रहा है। ब्रॉडर स्पेक्ट्रम हमने उस पर बात की हुई है, बट आज के इस एपिसोड में हम इसी कॉन्टेक्स्ट में बिल्ड करेंगे कि ये जो बलोच इंसर्जेंट्स हैं और जो TTP है उनका ग्रोइंग इन्फ्लुएंस जो है उसको भी, और साथ में इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हैं, क्या ये दोनों डेवलपमेंट्स अनरिलेटेड हैं? ऑब्वियसली नॉट। पाकिस्तानी स्टेट का पर्सपेक्टिव यही है और बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी ऐसी सामने आई हैं जिससे ये वाज़ेह होता है कि दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन मौजूद है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल नाज़रीन। फॉर एग्जांपल, जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट पीक पे था इन द सेकेंड वीक ऑफ मे, तो उस वक्त जो BLA है उन्होंने एक लेटर इशू किया था
वन पेज लेटर था जिसमें उन्होंने क्लियरली इंडिया को ऑफर की दैट वी कैन, इफ यू सपोर्ट अस, we can launch strikes in Pakistan on the western front, and you can launch strikes on the eastern front, and we can sandwich Pakistan and Pakistan military between the two hostile actors, which is a clear indication that when India was involved in conventional threats to Pakistan, these elements were offering support through the non-conventional terrorist attacks on the western side of Pakistan. This is one of the clear indication of the collusion between the two. Indian government ने कभी भी उस ऑफर को रिजेक्ट नहीं किया. इसका मतलब they never accepted it but never rejected it, which means that they took a soft corner toward that. Besides that, एक बहुत important element नाज़रीन ये भी है कि जब ये वाक़यात बलूचिस्तान में हुए हैं तो many in India have celebrated it on the social media. Indian news channels have not shown any sympathy to the students, to the kids who were martyred or who were injured in attack. Rather they pin blame on Pakistani state for that. और ये जो apologetic behavior होता है towards terrorists, that is itself a kind of support that you want to give. Besides that, जिस तरह ISPR ने कहा that some of the Indian media, they have predicted these kind of attacks and they have stated that an attack is looming और उस context में ये attack होता है, which to some extent puts a kind of, it raises eyebrows on the involvement of India in these attacks. So in other words नाजरीन, although the operation जो ईस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान ने किया था इंडिया के खिलाफ, वो इंडिया के साथ कन्वेंशनल अगर थ्रेट में पास आया है, तो वेस्टर्न फ्रंट पे जो इंडिया के साथ हमारी हॉस्टिलिटी है, दैट सीम्स टू बी कंटिन्यूड, दैट इज अ काइंड ऑफ प्रॉक्सी, एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज कम अप विद अ न्यू टर्म जो बलूचिस्तान के अंदर रेबल्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, दैट इज फितनतुल हिंदुस्तान. That's a clear indication that Baloch insurgency is viewed as Indian proxies and TTP is Fitnatul Khawarij. अब नज़ीर पाकिस्तानी स्टेट का रिस्पांस क्या है? हमने देखा कि उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक DGISPR की तरफ से और जो होम सेक्रेटरी हैं उनकी एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर सिविल मिलिट्री कंबाइंड पोजीशन एक्सप्लेन की गई है और उसमें बिसाइड्स ब्लेमिंग इंडिया उसमें जो स्ट्रेटजी बताई गई है टू काउंटर दीज एलिमेंट्स वो बड़ी क्लियर है, एंड दैट इज कि इस मीनस को काउंटर करने के लिए जो एग्जिस्टिंग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं जिनको IBOs कहा जाता है अंडर नेशनल एक्शन प्लान, दे विल कंटिन्यू इंस्टेड ऑफ लॉन्चिंग अ फुल फ्लेज काइनेटिक मिलिट्री ऑपरेशन which Pakistan is either unwilling to and Pakistan is unable to launch, mainly because of the financial constraints, mainly because of the troop concentration on the eastern threats, and also because of the fact that Pakistan's economy cannot afford a full-fledged military operation at this point in time. और इवन स्ट्रेटेजिकली अगर बात करूँ, अगर टेक्टिकली बात भी करूँ, तो इस तरह के जो इंसर्जेंट्स होते हैं उनके खिलाफ फुल फ्लेज मिलिट्री ऑपरेशन डजंट मेक सेंस. उसके लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस आर मोर प्रिसाइज, effective and cost effective as well, and therefore Pakistan has decided to continue with the IPOs और उसके हवाले से एक significant जो intensity है that has to be brought over there in Balochistan. So IPOs ही होंगे but intensified हम कह सकते हैं IPO plus जो हैं that could be launched in Balochistan soon, and that's what was indicated by the state response previously. Although there were calls for a full-fledged military operation from certain quarters, but that seems unlikely to happen, and the government has clearly stated that there will be no ground offensive or kinetic measure taking place. Only IBO steps will be taken over there. But at the same time नाज़रीन, चूंकि इंडियन फैक्टर भी मौजूद है और उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल इंडिया का रोल रहा है फ्राम अफगानिस्तान एंड ईरान, और के एग्जाम्पल है कुलभूषण जाधव की एग्जाम्पल है, बलाच मरी की एग्जाम्पल है, ब्रह्मदा बुगती लिव्ड इन अफगानिस्तान फॉर सम टाइम. तो जो अफगान और ईरान कनेक्शन है उस हवाले से भी पाकिस्तान विल टेक मेजर्स. और हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, ही इज लाइकली टू विजिट ईरान एज वेल फ्रॉम टुडे. ही विल बी विजिटिंग मल्टीपल स्टेट्स. और जो पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जो डिप्लोमेटिक वर्चर्स चल रहे हैं, दे आर आल्सो लाइकली टू पुट प्रेशर ऑन दीज स्टेट्स फॉर इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट. एंड बिसाइड्स द एक्सटर्नल पार्ट, पाकिस्तान शुड आल्सो एंड इज लाइकली टू आल्सो strengthen the border security so that the Indian involvement through these states that could be checked and significantly reduced in order to ensure security within Pakistan. But Nazim, as a scholar of this subject and this particular domain, I believe that these IBOs could solve the symptomatic problem that Pakistan faces. It might reduce the fever, but it is less likely to end the cause behind this conflict.
I think this is the lesson that we need to learn. The way militants acted in Indian occupied Kashmir, जिस तरीके से civilians को वहाँ target किया गया, and India acted irrationally by trying to attack Pakistan, thinking that this will end the intensity of the violence and militancy in occupied Kashmir, which is not true. Symptomatic treatments don't solve this problem. Pakistan needs to learn this lesson from Afghanistan, from India as well, and we need to make sure that besides IBOs, Pakistan need to go to the root of the problem, and the root of the problem is largely seem to be not working, or it is not the policy of the state to go for those options. Those could be multiple options. और उसकी एक एग्जाम्पल नाज़रीन हमें नजर आती है, जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अंदर बड़ा क्लियरली दो नाम लिए गए, एक बलोच यकजहती कमेटी का नाम लिया गया और एक मारंग बलोच का नाम लिया गया, and they were called the proxies of the insurgents. So generally speaking, अगर मैं इसको chain of connection बनाऊं, तो the government of Pakistan thinks that BYC यानी बलोच यकजहती कमेटी and मारंग बलोच जो उनके लीडर हैं, they are the proxies of the militant groups like the BLA and others, and the BLA and other militant groups themselves are the proxies of India. So this chain of connection is something that is less likely to help Pakistan. What I believe is that BYC, agar proxies hain, how to neutralize them, the answer to that question should not come from military, rather through political engagement and through building a narrative against such elements. But any use of force against the BYC and its leadership on the basis that they are proxies of the Baloch insurgents is likely to further alienate the local population and is less likely to be helpful in Pakistan's ultimate goal of establishing peace and security as well as prosperity in the Balochistan region. Therefore, in my view, taking the names of BYC and Marang Baloch in public forum by the security institutions should not have taken place. This statement should have come from the political leadership, even if the government believed so. And that is why, Nazreen, I believe that a multi-pronged strategy to deal with the causes of the problem need to be done. Besides intensified IBOs to create deterrence and to put them in the back front and to ensure a temporary stability and security, besides that, Pakistan need to use the diplomatic forum. Pakistan need to go for border management. Pakistan needs to move towards disarmament of the society. Pakistan needs to move towards the countering narrative that is being promoted inside Balochistan, across Pakistan by these militant groups, and also cornering the elements, radical elements who support them in Pakistan without using force, rather through the narrative building and through the encouragement of finding truth and avoiding any kind of ambiguities and the false news. Therefore, Nazreen, I think the best way to fight the war against a narrative is media. So Pakistan needs to learn media management. Pakistan needs to learn to use its more than 65% youth, which is less than 30 years of age, and using this human resource to build a counter narrative against those elements. That's where we can win the war against militants. Only military steps won't solve the root cause of those problems, and therefore repeating Indian mistakes will only exacerbate the problem, and it is likely to create diplomatic and foreign policy challenges for Pakistan as well. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.